We are going to start dipole radiation. Dipole radiation, you might have studied in your previous electrodynamics class. Electric field due to dipole. When you get field due to charge, the other is field due to dipole. है ना, उसका एक पर्टिकुलर डिपेंडेंस होता है वहाँ पे और आपके remember. So, but in today's class, what we are going to see how is basically radiation, which is by virtue of dipole, dipole radiation. We are going to take our understanding of radioactive potentials which we had previously also. And do different decomposition and other things. तो उसमें हमारा जो टाइम था ना, टाइम था, it was R dot n by c. The expression 66.1, they just write it here. ये एक था हमारा किसके लिए करते हैं? It was for R dot n by c. एक था हमारा which is 5 field and the other was for A. We had two fields, one for phi and one for it was retarded potential. जो ये rho t minus ये था यहाँ पर subscript है. It is जो charge density था for given potential. हमारे पास basically we are trying to study एक retarded potential एक charge का phi which is source charge or a charge which is due to current density. ठीक है, करंट मूव कर रही है उसकी वजह से A है and source charge की वजह से phi है. तो ये दो पोटेंशियल्स हैं, इन दो पोटेंशियल्स की वजह से एक चार्ज डेंसिटी दिस इज करंट डेंसिटी. ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर at time t minus this thing, but we had also this factor gamma dot n by c, gamma dot n by c. This was that orientation, source charge na, orientation of this thing with regard to कैसे चार्ज अंदर आ रहा है. अब ये है कि टाइम इसलिए टाइम है ना, इसलिए x by ये कैन ऑल्सो राइट इट लाइक x by t. ये कर जाएगा ये t है. You can also write time like this. This is time for the retarded potentials. Retarded potentials. Good charge यहाँ से है. The field a signal something goes and it comes here. तो backward direction में यहाँ से कहाँ कितना टाइम लगेगा for a signal or for an interaction. Interaction हमारी है क्या? जो E fields and B fields प्रोड्यूस होते हैं by virtue of this phi and A. Phi and A की वजह से जो हम try to formulate our understanding of E fields and B fields कैसे change हो जाती है. And with regards to some source charge which is here. And उस source charge का अपना एक charge होता है, उसको if it's at rest rho अगर current move कर रही है then it's G. अब ये है कि if you want to write it in terms of for example the radiation of charge system contain periods of order t. जैसे किसी भी radiation जो produce होगी उसकी अपनी wavelength होगी, अपनी एक frequency होगी, है ना. कोई भी है ना, कोई भी wave है, whether it's a mechanical wave or electromagnetic wave, तो इसकी अपनी एक frequency भी हो सकती है और अपना wavelength हो सकता है.
तो जो चार्ज यहाँ से जो सोर्स चार्ज की वजह से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या टाइम पीरियड प्रोड्यूस होगा, अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इट विल बी दिस एज 2 यूनिट्स ऑन टाइम पीरियड। तो जो ये टाइम जो हमारा ये है और डॉट एन बाई सी it will be approximately a by c. So we write r dot n को हमने a के साथ किया। In order for the distribution of charge in the system shall not undergo significant change in that it is necessary that a by c is very less than t. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि where c t जो है यहाँ से इसको यहाँ करेंगे c t is the wavelength of radiation, और इसका मतलब है कि A shall be very less than lambda। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि the dimensions of the system should be small as compared to the wavelength of the light produced। वो जहाँ सोर्स चार्ज की वजह से जिसकी वाइब्रेशन जो भी है उसका जो डायमेंशन है इट इज लेस देन द वेवलेंथ व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस थिंग। दिस इज वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस आर्गुमेंटेशन, हम ये इन्फर कर सकते हैं। अगर हमने ये इन्फर किया सो व्हाट वी विल डू नाउ, इंटीग्रेशन। Therefore, the exponent I dot k dot r is small and can be neglected for those waves in which k is very less than. So we can if I k dot r is small I k dot a है या r है, if it's small we can neglect it for. यह कंडीशन कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इसको इसका है ना न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी, व्हेन न्यू लैम्डा इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ दिस हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे, देन जो टाइम पीरियड है तो t कैन ऑल्सो बी रिटन एज a by b। You can also be written as a by b, or lambda can be equivalent to lambda। अगर टाइम पीरियड को in terms of wavelength लिखिए तो उसको in terms of frequency लिखिए तो you can also write it like lambda can also be written as c a b, where b is the order of magnitude of velocities। इसका मतलब है for a very less than lambda we can find b The whole point of saying is that जो velocities है we can restrict the velocity less than velocity of the light, तो अब ये है कि I'll summarize ये है कि जो retarding charge यहाँ जिसकी वजह से हम we are studying some electromagnetic wave which is being produced, it's always smaller than the dimension of this dimension, ठीक है। So this is followed from this थोड़ा सा convoluted argumentation है, because remember जो source charge है ना ये है, इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं at t minus r naught by c, और गामा डॉट ये कल मैंने कहा था ना v dot n by c, इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी? जैसे अगर यहाँ पर है तो ये डॉट ये जो दे रहा है ये ओरिएंटेशन दे रहा है, ठीक है। हम कल इसका गामा डॉट n by c को डिनोमिनेटर में we did away with this, but numerator में हमने नहीं इसको we did not absorb it or we did not cancel it। So from this argumentation now we are going to come argumentation क्या थी हमारी argumentation ये है from this जो dimension of wave which is being produced here, the wavelength of the radiated wave, it is smaller than, it is greater than the dimension of this charge जिसकी वजह से produce हो रहा है। एक one
from this argumentation. And velocity जो होगी it should be very less than, smaller than the velocity of light. So two things we have inferred from this argumentation. ये दो चीज लेते हुए that the dimension of the wavelength is always greater than the dimension of the source charge जहाँ प्रोटॉन स्टोर किया, और velocity of light can be restricted less than the velocity of light. ये चीज हमने from this logic करते हुए now we are going to change our हमारी definition of retarded potentials है, उसमें हम इस सब को substitute करेंगे. So we see how what will come out, what will come out. So vector potential जो हमारा था in 66.2 निकाला हमने, हाँ ये वाली. So if you want to write it in simplest form, 1 by c or naught ये, so ये will not write this. It's understood. This is the current density. You should always है ना, जहाँ वेक्टर पोटेंशियल है इट्स एसोसिएटेड विद करंट डेंसिटी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट डेंसिटी इज गिवन वॉल्यूम. अगर 5 होगा यहाँ रो होगा, ठीक है. सो एक्चुअली वी आर स्टडीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसी तरह at the time t, at the time ये तो हो गया हमारा वेक्टर पोटेंशियल, ये तो हो गया हमारा वेक्टर पोटेंशियल. अब ये है कि where the time t prime is equal to t minus or not c, ठीक है. टाइम क्या हो गया, टाइम is t minus or not by see, that's it. Means कुछ टाइम के बाद ये we are observing it for the retarded wave. अगर forward wave हुई तो ये t plus, because we are taking the retarded solution. That's why we are taking t prime at t minus. हम कोई wave observe कर रहे हैं ऐसे, ये past में कहाँ पर थी, ठीक है, इसका मतलब वही है. अगर प्लस होता तो फ्यूचर में कैसे 5 मिनट बाद कहाँ पहुँचे, ठीक है. So इसका expression like that, that's the thing. अब ये substituting J is going to prove ये current density है, current को integrate and also write it like this. Current जो है denote, तो from this A को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by c और नॉट, ये रो भी है, इसमें रो भी है ना, रो भी ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसे लिखा है ई है, सिग्मा ई हो गया चार्ज, टोटल चार्ज, इसलिए ये रो भी रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. यू कैन आल्सो राइट इट एज सिग्मा, टोटल चार्ज इन ए गिवन वॉल्यूम. ये भी अपना अब ये है कि वर्क इंडेक्स ऑल क्वांटिफाइज से, बट अब ये है कि सिग्मा ई हम इसको ये क्या है, ये है इसकी डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा ई आर है कि नहीं, क्यों जाएगा ना, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी. वी कैन राइट दिस आल्सो लाइक, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कुछ पड़ेगा फर्क. अब ये वेलोसिटी के बदले में इसका डी बाई डी टी ऑफ आर, ई इज द चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, इसको हम बात करेंगे. और जो सिग्मा ई आर है, ठीक है, तो दिस थिंग वी कैन राइट एज डी डॉट. और इफ यू रिमेंबर इन योर क्लासेस क्यू डी है ना, उसी को हम डायपोल कहते थे. चार्ज इनटू डिस्टेंस को ही हम डायपोल कहते हैं.
कि नहीं? तो अगर हम डायपोल को डी के साथ डिनोट करेंगे तो ये आगे यू कैन आल्सो राइट इट एज डी डॉट। ठीक है, हाउ डायपोल चेंज डायपोल का टाइम के साथ डेरिवेटिव, सो इफ राइट ई आर एज वी, इसका डेरिवेटिव है, यू कैन आल्सो राइट इट एज डी डॉट। अब वी हैव नॉट जो चार्ज है ना, चार्ज हम अभी मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट, ठीक है, where D is the dipole moment of the system. So thus जो A है, A है, that will be equal to A, ये होगा A वेक्टर पोटेंशियल। A के बाद हम क्या लिखेंगे अब? A के बाद you can also write it इस E के बदले हम we are going to substitute this D dot. So it can also be written as 1 by CR naught into D dot. Okay, यहाँ पर। Now we are going to come to our definition जो हमारी yesterday A को हमने reduce किया ऐसे लिखा। We have written vector potential in terms of dipole moment, derivative of the dipole moment. ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। Now we are going to just जो हमारा कल का था कि हम E fields and B fields, E fields और B fields को in terms of H magnetic field and in terms of the Poynting vector की understanding से हमने किया था, and we are going to substitute it there. We are going to substitute it there. So with the aid of formula 66.3 और जो हम कल कर रहे थे, so we can write it, still write it 66.3. H is going to 1 by C A dot cross n, इलेक्ट्रिक फील्ड है B इसके बराबर क्रॉस n जो मैंने कल कहा था। तो E फील्ड में एक क्रॉस और आएगा, दैट मीन्स यू डायरेक्शन, ठीक है। H फील्ड में ये आएगा A dot cross n। नाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट A को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर, है ना। अगर आप A को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ D डॉट एक D डॉट है, तो ऊपर अपना डॉट है, तो दो बार डेरिवेटिव आएगा, D डबल डॉट आएगा कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूट किया है ना, यहाँ A डॉट अपना है, क्योंकि एक के बदले हमने ये लिया D डॉट, इसका एक्सप्रेशन एक डॉट अपना है तो डबल D डॉट आएगा, मींस दो बार डेरिवेटिव आएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड एक बार डेरिवेटिव आएगा C, दो बार दूसरी बार डेरिवेटिव आएगा वो बाहर आएगा C, तो इस चीज में आएगा D डबल डॉट क्रॉस n। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो बार आएगा ना D डॉट, सिर्फ इसमें ये क्रॉस n दो बार, तो ये आएगा 1 by C स्क्वायर और नॉट D double dot cross n. So these are the how we have first arrived at regarding potential from vector potential A in terms of dipole momentum D dot. We just substituted it. हमारी जो definition of magnetic field है and electric field. So what did we get? What are we going to get? आप देखिए, जब D डबल डॉट है, व्हाट्स इट? एक बार D डॉट है इसकी वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। So from this what did we get? We got तो leave away, this is constant. तो अगर D डॉट ये D है, E R, तो D डबल डॉट क्या होगा? सिग्मा E D, है कि नहीं?
एक बार आएगा आर डॉट, दो बार आएगा सो ग्रेटर टोटल वेलोसिटी और ई डॉट। तो इसका मतलब क्या है? सो वी हैव गॉट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हमारे पास आ गया। क्या आ गया? इसका मतलब ये है कि चार्ज only radiate when they are in acceleration, so uniformly moving charges do not accelerate. So this is an important result. So whenever charges accelerate, then only they can radiate. If they move uniformly, they will not radiate. So this follows from this logic. Okay, you got the point. So this is an important thing which we just need to stop. I'll say memorize it. Just this is important result you should know. Or charge radiate when there is acceleration. When there is uniform motion, they do not अब हम again going to do something more हम करेंगे इसमें we are going to use जो हम कह रहे थे ना कि now we are going to integrate। चार्ज चलो हो गया radiate due to acceleration of charge। अब net electromagnetic wave जो है ना जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फ्रॉम दिस क्लोज सिस्टम, जिसमें हमने कल किया था पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैंने कल कहा था, हम वो एक्सप्रेशन को वी आर गोइंग टू लेंगे एक सॉलिड एंगल उसको इंटीग्रेट करेंगे अराउंड एंटायर स्फीयर या अराउंड एंटायर क्लोज सरफेस। स्फीयर इज अ वेरी क्लोजेस्ट, ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि हमको पता है इसका इंटीग्रेशन है 4/3πr क्यूब या जो भी है 4πr², ठीक है। So substituting in 67.5 and 76, कल वाली इक्वेशन 67.5 इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास कल था। इंटेंसिटी था ना, हाँ, intensity, if you remember, it was like this. Vi is going to see h²/4π or not square du. Du is the solid movement. Sin theta d theta. Actually, solid हम लास्ट में तो मेरे पास ऐसे थे। I will be equal to 1/4π c square। एक बार पूरा आएगा कि bc h के बदले हम लिखेंगे ये डॉट है कि हमारे दो बार आएगा ए डबल, फिर हम यहाँ इसको ए सब्स्टिट्यूट किया, ये आएगा एच के बदले लिखेंगे ये डी डबल डॉट। We can write it as d double dot cross n अपना h का स्क्वायर अपना और अपना d वो इज सॉलिड। अब सॉलिड एंगल क्या है? तो हम बेसिकली लेते हैं एक
है उसमें कितना हो गया, फिर हम पूरे स्फीयर में करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। फिर हम प्रॉपर चॉइस ऑफ इंटीग्रेशन थीटा एंड फाई, ठीक है, वो वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करते हैं अगर पूरे स्फीयर में करना हो। तो दिस इज यू आर गोइंग टू डू द सेम लॉजिक हियर, do या d rho is equal to 2 pi sin theta d theta. So integrating theta goes from theta to pi. So again, आप इसको इंटीग्रेट करो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करो. What is the net intensity to what? Due to this dipole, जिसकी वजह से रेडिएशन होती है. That dipole जो है, हाँ, if you are not interested, you can just go out itself. Okay. So if you want to sit here without disturbing others and yourself, you also. अगर नहीं है इंटरेस्ट कोई बात नहीं, हम लोग तो ये है ये है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू डिस्चार्ज, d डबल डॉट, हाँ d डबल डॉट ये डायपोल की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, उसी की वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है. अब रेडिएशन हमको इन्हें गिवन नेट वॉल्यूम निकालना है, इसमें वो चार्ज है, डायपोल है, जिसकी वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है. अब रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस, अगर हम लेंगे कोई स्फीयर है ना, हम देखें ऐसे पहले ये को लेंगे, फिर उसी को फिर इंटीग्रेट करेंगे पूरी स्फीयर की, उसी में फिर हमको इस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to थीटा टू पाई और sin थीटा. अब ये है कि इंटीग्रेशन आप करना अपने इट्स वर्क. अब इसमें ये है कि ये है, अगर आप इसको बाहर भी निकालोगे 4 पाई सी डबल डॉट क्रॉस एन, इसको स्क्वायर को रखोगे, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे डी हो इसका बाय साइन थीटा डी, ठीक है. तो एक बार तो इसका आएगा, इसका आएगा cos थीटा, फिर आएगा cos थीटा में आएगा 0 to पाई, ठीक है, कर करके इंटीग्रेशन शुड कम आउट. अब इसमें यह है कि 4 पाई तो कट जा रहा है, ठीक है. सो वन थिंग इज दैट ये नीचे 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, आप इसको चेक करें. आई डिड नॉट गेट द टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग. ये 3 कैसे आ रहा है फैक्टर, 4 तो कट जाएगा, वहां से 4 आएगा, बट ये आल्सो गेट्स फैक्टर ऑफ 3. सो दैट्स योर, ये आपका काम. So we get this intensity जो है, intensity है, that comes out to be this. Intensity comes out to be this. So it's square of the acceleration of this. Square of the ये 2 बार derivative है the acceleration. So intensity depends upon rate of change of velocity of the dipole. उसका square इस पर इंटेंसिटी का डिपेंड करता है, इसका रेडिएशन का. अब इसके फर्दर इफ यू सी टू द बुक, if d is going to be r, d double dot to इसको he writes it as e double dot. If you want to follow the book, you can total radiation of new charge d के बदले ये लिखेंगे e square W square by 3c. Okay, like we note that a closed system of particles for all of which the ratio of charge to mass is same and cannot radiate by dipole radiation. अब ये closed system of particles के लिए ratio of charge to the mass means is the same. अगर रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास सेम है, रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास सेम है, that means basically charge into distance, or you can also write it as meter term. Why he is saying this is, if you remember हमने कहा था पिछली बार जो रिलेटिविस्टिक मासेस हैं उनका सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं होता है, and particles move at higher energies
जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट द सेंटर, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, so that doesn't hold. If you have relativistic mass, because the mass is given when particles move at higher velocities, उनका mass constant नहीं रहता, उस हिसाब से the center of mass will not remain constant. तो जो वो वाली अंडरस्टैंडिंग है, that has to be modified. So that's why this we are studying electrodynamics at higher velocities, है ना? Four vector notation. जो sigma mr है, sigma mr is equal to r times sigma m. So this understanding है, इसको आप summation नहीं कर सकते ना ऐसे uniformly. Where r is the radius vector of center of mass. m1 r1 plus two particles में तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे r plus m1 r1 plus m2 r2 पर m1 r1 is equal to r2, ये आता है ना, ये mean of this है, normal two particles है. अगर n पार्टिकल भी होगा फिर m1 r के n can have sigma ऐसे आएगा, I don't want n ऐसे you write it like this. मगर अब ये है कि so this can be true for if the velocity of the particles is very less than c. अगर वो बात नहीं है, therefore if d is proportional to acceleration of center of inertia, which is 0 since the center of mass moves uniformly. R is radius vector, remember that all point. So non-relativistic mechanics is applicable. This is what I was saying. So therefore d dot double dot is proportional to the acceleration of the center of mass, which is 0 since the center of mass moves uniformly. अब ये है कि now what we are going to do. Since the center of mass moves uniform motion के लिए जो अभी कहा था ना, radiation तभी possible होती है when there is an acceleration. अगर uniformly center of mass move कर रहा है, then the acceleration will not move. So there will be no radiation. But if particles move at higher velocities, तो radiation potential का emission. The center of mass will not exactly like the uniform center of mass नहीं होगा. Subtle point. Now, आप जो हमें जो भी this understanding है, what we have arrived at, we are going to do it in terms of Fourier modes में, spectral representation of this formula को spectral representation, in terms of Fourier decomposition करेंगे इसका, ठीक है? वैसे भी लिख सकते हैं इस formula को. वो कैसे लिखेंगे? What we are going to see is in terms of finally we are going to give spectral resolution of intensity of dipole radiation. So we introduce a quantity S. Energy radiated throughout the time of collision in the form of waves. The frequency अब इसका Fourier interval, Fourier जो component है ना, that's written by this. अब देखना बैक में मास फैक्टर ऑफ यहाँ है ना 2/3, उसका फैक्टर 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा ये 4/3 बन जाएगा. और ये है फ्लैट देखो स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखते हैं. We are writing this energy of this dipole radiation in terms of spectral radiation. अब Fourier components को कैसे हम डिफाइन करेंगे? d डबल डॉट है, ये दो बार डिफरेंशिएशन है. ये किसका है? e to the iota omega t का है. ये है cos एंड sin waves. cos में
एंड साइन वेव। ये कॉस एंड साइन वेव कौन है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है जो रिटार्डेड पोटेंशियल, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। सो इसमें रिप्रेजेंटेशन, so you can also अगर दो बार डिफरेंशिएशन है इसकी डबल डॉट, तो इसको आएगा ऐसे तो दो बार अगर डिफरेंशिएशन आएगी, एक बार ओमेगा निकलेगा, दूसरी बार ओमेगा स्क्वायर आएगा, बाहर निकलेगा डिफरेंशिएट कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, और डी डबल डॉट ओमेगा को हम ऐसे लिखेंगे, इसको इसके साथ कट जाएगा तो आल्सो राइट इट लाइक दिस। तो total energy जो होगी which is in a given due to this dipole radiation जो होगी, इसकी intensity ये है, you should also know intensity and total energy को कैसे और integrate it along the entire thing, so you can write it as 4E। ये ना d दो डाइट ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ इसका अपना स्क्वायर, स्क्वायर का ऊपर आएगा स्क्वायर, ये ओमेगा 4 बन जाएगा। और अपना ये ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज द फाइनल इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल एनर्जी। अब ये कह रहा है फॉर पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स वो ओक्यूपल सिमिलर फैशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर आप पीरियोडिक मोशन है तो ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं, some multiple of some primitive frequency omega naught, then you can write this intensity of the radiation as omega naught 4 and 4 omega के बदले में so this is energy, this is intensity. So what we have done today is from our previous understanding of retarded potentials we have arrived at how the charge जो इनसाइड होगा जो क्लोज वॉल्यूम उसको हम कैसे रिराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल्स, एंड वी गॉट द मीन टाइम व्हेन हमने उसको द प्रॉपर रिडेफिनिशंस किया, वी फाउंड दैट जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है दैट्स प्रोड्यूस ओनली व्हेन द चार्ज आर एक्सेलरेटिंग, व्हेन द डायपोल इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। इफ इट्स इन यूनिफॉर्म मोशन नो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, ये एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट एंड देन वी जस्ट वहाँ से हमने इंटेंसिटी को निकाला बाय प्रॉपर इसको करके, और इसको आप घर पर कर रहे हैं कि का फैक्टर कैसे आ रहा है, इस इंटीग्रेशन को आप करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम दिस हाउ वी अराइव एट दिस जो, ठीक है। सो आई विल कंक्लूड, सो उसके बाद इंटेंसिटी इसमें फिर एक और फैक्टर है कि अगर मास यूनिफॉर्म है गिवन चार्ज तो उसमें भी फिर रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि मास अगर यूनिफॉर्म है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर ई बाई एम कांस्टेंट है तो किसी भी क्लोज सरफेस में इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से है। ओनली व्हेन द चार्ज आर एक्सेलरेटिंग एट हायर वेलोसिटी तो फिर डायपोल रेडिएशन, दिस इज अनदर थिंग वी गॉट। एंड द लास्ट पॉइंट ये था हमने इस सब को एक्सप्रेशन को राइट करके जो पूरे डिकम्पोजिशन टोटल एनर्जी एंड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, एनर्जी का है, इंटेंसिटी का है, ये एनर्जी और गिवन रेडिएशन, ठीक है।